So let us start today. Today we will be discussing Juvenile Justice Act, Juvenile Justice Care and Protection Act 2015. We all know that delinquency is a growing problem of our society, and this problem is not of our society but world over. This problem is being witnessed that juvenile offences are increasing. So what is the reason why it is increasing? What is the different data regarding this? And then what is the law to deal with this problem of juvenile delinquency? So if we talk about juveniles, it means the crime committed by children. And you all know the child means a person who is below 18 years of age. And for the purposes of this act also, Juvenile Justice Act, the age is 18 years. Previously the age was different for girls and boys, but now it is uniform. Earlier it was 16 for girls and 18 for boys, but now for both of them it is 18 years. So up to the age of 18 years, if any act is committed or any omission is done that is in contravention of any law, it amounts to juvenile crimes. So if we look at the data, we find that it is increasing every year. And if it is compared, because the latest data that is of 2019 only. So if we compare the data of 2018 and 19, we find that there has been an increase of 2%. And 32,235 cases were reported in 2019 as compared to 31,591 in 2018. And majority of the offences that are being committed by children are not only the offences which are defined under the IPC but also under the special laws also. So they are committing the crime in general, that of theft, more common. They have also been involved in dacoity, murder, sexual offences, rape cases. So all kinds of offences are being committed by these juveniles. Sometimes they are themselves committing, and sometimes they are abated by the adult persons. So it is a very, very grave thing that the children who are at the age of education and they should be involved in constructive activities, they are involved in the world of crime. And one of the data that has been analyzed by the National Crime Record Bureau is that they have segregated the data that what kind of children are committing these crimes, whether they are homeless persons, they are living with their guardians, or living with their parents. So it is very, very astonishing fact that the more of the crime is committed by those children who are living with their parents rather than by those who are in homeless situation or living with their guardians. So when the children are in a complacent position, they have the confidence of their parents, there they are breaching their confidence and involving themselves into the world of crime. So what are different reasons for this juvenile criminality? So one of the reasons that is being talked over is that of poverty or the economic reasons, but it is not always so, because we have seen, and you all must have also analyzed this fact that these offences are committed by also those children who come from well-off families. And even in schools, you all must have encountered the cases of bullying, that is of beating by their fellow colleagues or children or students
in the schools also. So from very childhood, because of certain reasons, the children are involved into the world of crime. So it is not always the poverty or the economic reason, but sometimes it is psychological also. And one of the analysis of data also shows that most of the crime is being committed by children who are between the age of 16 to 18 years. So this age of 16 to 18 years is very, very vulnerable age, where lots of changes are taking place physically, mentally, emotionally. Lots of hormonal secretions are there in the body, and one is not able to understand even oneself. So sometimes a child becomes very, very introvert, or sometimes become very, very extrovert, and some became very, very aggressive. So there may be psychological reasons, there may be pathological reasons, there may be social circumstances also. So if we analyze the different factors of crime which are there for other crimes, they also work so far as the juvenile offences are concerned. So just only to blame that only because of poverty, economic reasons, or for having some kind of money, they indulge in some kind of offences. Sometimes they are also lured into the world of crime by adults. They are abated because adults know that if the crime is committed by children, they will be punished with lesser offences than those who commit crime with a certain age. So as an adult, if they commit the crime, they will be having graver punishments, but if the crime is by children, they can get scot-free, or by just admonition, etc., they may be let it go. So that has been the reasons for the juvenile delinquency. Sometimes it is the peer pressure also, because of which the children commit the crime. So in order to deal with this problem of juvenile criminality, a different kind of mechanism is required, because they cannot be punished like adults, because they are in the age of formation. They are growing up children, and they may not be able to understand the nature of their work because of the changes that are taking place, and they are not able to understand the environment or the circumstances around them. So therefore, even in IPC, Indian Penal Code, Section 82 says that nothing is an offence which is committed by a child. So there is no criminal liability of a person who is below 7 years of age. And Section 83 says that a child who is above 7 years but under 12 years, and if he has a proper understanding, and if he can understand the nature of the act, he can be made criminally liable. So if we speak of the general law that is under the Indian Penal Code, we find that the criminality may be there if a child is above 7 years and below 12 years. But if we look at the Juvenile Justice Act, the age of juvenility is up to the age of 18 years. So since it is a specific law, so now the presumption of innocence will continue up to the age of 18 years. So their criminal liability will be lesser depending upon the circumstances. And then you all know that after this Nirbhaya gang rape case, when the things were being debated, and a lot of discussion was there that the age of juvenility must be reduced from 18 to 16 years. कि बच्चों को जो पनिश करने का उम्र है वो 18 साल से घटा के 16 साल कर दी जाए, because the children are committing serious offences, heinous offences, and they must learn a lesson for that. बट बहुत सारा इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट किया, साइकोलॉजिस्ट से भी काफी डिस्कशन हुआ. फिर ये पाया गया कि नो, अप टू द एज ऑफ 21 years द माइंड इज इन द growing stage. So a child is not able to understand that what he is doing is right or wrong. So the sense of distinguishing between right and wrong is not very mature up to the age of 21 years. So we just cannot lower the age of juvenility from 18 to 16 years just to punish the children.
because it will have a very, very bad effect upon their personality, and it may affect their future growth and development. So that thing was not changed, but in the juvenile justice jurisprudence, the classification was made between the children up to the age of 16 years and from 16 to 18 years. And if the children are committing heinous offences who are above 16 and below 18, then they may be tried as an adult, but not in the courts which are there for prosecuting the adult criminals, but for having special children courts where they can be prosecuted. So a kind of distinction has now been made up to the age of 16 years and above 16 to up to 18 years. So we all know in every society the children are the future of any nation or the society. So even in the constitution also we have studied in earlier lectures that there are constitutional provisions which provide for the protection of the children. So the Article 15 Clause 3, which talks about the special laws that can be made for the protection of the rights in children. Then there is Article 39 E and F that I explained when I was discussing the Child Labour Act also, that Article 39 E says that tender age of the children should not be abused. So every step should be taken by the state in its policies, that just because of the economic necessity the children are not forced to enter into avocations that do not suit their age or strength, because if they are there working in abnormal situations or the situations which are not comfortable for them, so offences may be committed against them, or they may be involved in certain kinds of activities which is not suited to their age or the strength, that is the physical strength or the mental strength. So the age of the children should not be abused. Such kind of policies and programs should be there. And then Article 39 Clause F says that the childhood need to be protected against exploitation and against moral and material abandonment. It means their mental and emotional health must be taken care of in every way, either through the education, through the counseling, or by taking care of their needs. So it is a responsibility of the each and every government, both at the state level and at the central level, to take care of their children, because they are the future of the society and that of the nation. And then Article 45 talked about to provide the early childhood care and education for all the children until they complete the age of 6 years. And correspondingly the Education Act was brought in 2010. If it became effective from 2010, though it is that of the 2009. So by the 86th Amendment Act 2002, the free and compulsory education for children was introduced. And why this education was made compulsory? So that the children are not involved in the economic avocations or in the work which disturb their education. So if they will be involved in the education, then their mind will be diverted from the world of crime and etc. So education is very, very important, and it provides the foundation of life to any person. So education is very, very important if we want to take away the child from the evil activities or the activities which are called as antisocial in nature. So it is a duty of the state under Article 47 also to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve the public health. That's why you know that near the school side etc. the selling of tobacco, then drugs etc. is prohibited, so that the children are not involved in such kind of unhealthy eatings or activities. And then there has been international compulsions also to amend the law which was there for the protection of the child rights, because India has been signatory to Convention of the Rights of the Child adopted by the General Assembly of United Nations, which has prescribed a certain set of standards which need to be adhered by all the state parties in order to secure the best interest of the
child. Then there are, besides the CRC, Convention of the Rights of Child, there are other international conventions also which enforce upon the nations or the state parties to make the law as per the international norms. So there are United Nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice 1985, that is known by the name of Beijing rules. And then there is United Nations rules for the protection of juveniles deprived of their liberty 1990. There is Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of inter-country adoption, and other related international instruments. So a lot of international documents and instruments are there which impose a duty upon the state parties to secure the best interest of the child and to make the law in consonance with the international standards. So that's why this Act of 1986 Juvenile Justice Act was first amended in 2000, and again it was overhauled, and now a new Act 2015 is there. And this Act is very, very voluminous Act, because it not only talks about the juveniles who are children in conflict with law. It means they are involving themselves in the such kinds of acts and omissions which are against the law or against the set norms of the society, which invites the penalties. And then there are also children who are in need of care and protection. So there are children who are orphan, who are destitutes, who have been abandoned. And you all know that in this COVID situation also, where the children have lost their parents, somewhere they have lost both of their parents, some where they have lost one of them. So now they are in a situation of abandonment, destitute, orphan. So these kind of children also need a lot of care and protection, because if they are not taken care of, then they may be abated by the criminals who are mongering in the society, and they may be lured into the world of crime. So that's why the child trafficking is there, begging is there. So all kinds of organized crime and syndicate crime is there, where the children are abated by these criminals. So this act is very, very voluminous. Not only talks about the children who are in conflict with law, but also the children who are in need of care and protection. Then this act also provides for the procedure for the adoption also. So it is a big act having 112 sections. So if you look at the application of this Juvenile Justice Care and Protection of 2015, we find that it applies to all the matters which are concerning to the children who are in the need of care and protection and who are in conflict with law. And what kind of provisions it has? It provides the procedure for the apprehension, detention, prosecution of the children. It provides for the penalty or the imprisonment. It provides for the rehabilitation and social reintegration of children in conflict with law. It also provides for different procedures and decisions or the orders that can be passed regarding the rehabilitation, adoption, reintegration, and also for the purpose of restoration of the children who are in need of care and protection. So there are some important definitions. So one of the important definition is that of the child. So who is the child? So section 2 clause 12 says that child means a person who has not completed 18 years of age. Then section 2 clause 13 provides that what is the meaning of child in conflict with law. Child in conflict with law means a child who is alleged or found to have committed an offence and who has not completed 18 years of age on the date of the commission of such offence. But there has been a lot of debate that what should be the cut-off age, whether it should be the age on which the child has committed the crime or it should be the date on which the prosecution starts. So there were various judgments of the High Court and the Supreme Court, and there were no unanimity upon the point that what should be the cut-off age for the child in conflict with law.
But ultimately in 2005, in the case of Pratap Singh versus State of Jharkhand, the date was fixed that for determining the age of child in conflict with law, the relevant date will be the date of commission of the crime and not the date when the prosecution starts. So now it is well established in the case of Pratap Singh versus State of Jharkhand, 2005 Supreme Court, that relevant date for the commission of crime is the date on which the crime is committed by the child. Now section 2 clause 14 provides for the definition of child in need of care and protection. So a long list is given which very elaborately defines that what is the meaning of child who is in need of care and protection. It says that a child who is found without any home or a settled place of abode and without any ostensible means of subsistence, यानी कि जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास घर नहीं है और जो अपनी लाइवलीहुड को सपोर्ट नहीं कर सकता. देयर इज नो सब्सटेंटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. So that is a child who is in need of care and protection. And then a child who is found working in contravention of the labor laws and who is begging or living on the street. तो ऐसे बच्चे जो कि चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, जो भीख मांग रहे हैं या सड़कों पर रह रहे हैं, और द चिल्ड्रन हु आर रिसाइडिंग विद द पेरेंट्स बट दे आर इंजर्ड, एक्सप्लॉइटेड, abused or neglected the child or has violated any law which has been there in force for the protection of the child. So ऐसा नहीं कि जो बच्चे अपने गार्जियन के साथ रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे दैट दे नीड द केयर एंड प्रोटेक्शन. तो गार्जियन और पेरेंटहुड में रहते हुए भी उनको इस बात की जरूरत हो सकती है कि उनको केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए. वो कहाँ पे, जहाँ पे themselves the parents are involving the children in some kinds of illegal activities, where they, like the children of the cases of domestic violence, there also children need a lot of psychological support and economic support because they may be abandoned by their parents or by one of the parents. तो ऐसा नहीं कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई गार्जियन नहीं है, जिनका कोई पेरेंट नहीं है, जो होमलेस हैं, जो भीख मांग रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही बच्चे जो है वो नहीं है जो कि जिनको की केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए, बल्कि ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो कि घर में रहते हुए ही तमाम तरह की एब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन का जो है वो शिकार है. एंड इसमें वो भी बच्चे आते हैं हु आर मेंटली इल और फिजिकली चैलेंज्ड और सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ टर्मिनल और इनक्योरेबल डिजीजेज, हैविंग नो वन टू सपोर्ट और लुक आफ्टर और हैविंग पेरेंट और गार्जियन अनफिट टू टेक केयर. तो पेरेंट्स और गार्जियन भी अनफिट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रीजन, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रीजन, बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजिकल रीजन, सो दैट दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर चाइल्ड. तो एक बहुत लंबी सी लिस्ट दी हुई है. यू कैन गो थ्रू दिस सेक्शन 2 क्लॉज 14 टू सी दैट व्हाट इज द लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. Then what is the meaning of abandoned child? Abandoned child यानी कि जिसको छोड़ दिया गया है. It means a child who is deserted by his biological or adoptive parents or the guardians and who has been declared as abandoned by the committee after the due inquiry. तो जो एक्ट के अंतर्गत जो भी कमेटी बनी हुई है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है और जो चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी है, अगर वो डिसाइड करती है कि चाहे वो बायोलॉजिकल पेरेंट हो या एडॉप्टिव पेरेंट हो या फॉस्टर पेरेंट्स हो, अगर उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम, सो सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड एज अबैंडन्ड चिल्ड्रन. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड मीन्स it is a basis for any decision which is to be taken regarding the children to ensure the fulfillment of their basic needs, their basic rights, their identity, their social well-being, physical, emotional and intellectual development. तो जैसे कि आपने CRC में भी देखा होगा कि वहां पे भी जो प्रोविजन है, वहां पे जो चाइल्ड आइडेंटिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट ऑफ अ चिल्ड्रन to protect the identity of the child as well as to protect the
physical and mental and emotional development of the child, all kinds of steps need to be taken for the promotion of the best interest of the child. An orphan means a child who is without biological parents, without adoptive parents, or without a legal guardian, and whose legal guardian is not willing to take care of the child or who is not capable of taking care of the child. तो ऑर्फन का मतलब यही नहीं कि जहाँ पे पेरेंटल लॉस हो गया, पेरेंट्स हैं ही नहीं, ऐसे भी पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखना चाह रहे हैं या वो इस कैपेसिटी में ही नहीं है कि वो अपने बच्चों का ध्यान जो है वो रख सकें, तो उनको भी ऑर्फन और एबेंडेंड और डेस्टिट्यूट चाइल्ड की संज्ञा जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत दी गई है, जिनको कि स्टेट के द्वारा जरूरत है कि उनको उनका रख रखाव जो है वो किया जाए. नाउ देयर आर डिफरेंस ऑफ द ऑफेंसेस ऑल्सो. So there are some petty offenses, there are some serious offenses and there are some heinous offenses. As I told you earlier कि बच्चों की एज में क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण किया गया है कि 16 साल तक के बच्चे अगर कोई क्राइम करते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा, और 16 से 18 साल तक के बच्चे अगर जो है वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए किस तरह का जो है वो प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा. तो इसमें what will be the basis for that? That will be the nature of the offense committed by the children. तो 3 तरीके के offenses इसमें दिए हुए हैं. एक है petty offenses. Petty offenses have been defined under section 2 clause 45, which says that it includes the offenses for which the maximum punishment under the IPC or any other law for the time being in force is imprisonment up to the 3 years. तो अगर किसी भी लॉ में किसी भी अपराध को करने के लिए अगर सजा जो है वो 3 साल तक की है तो उसको पेटी ऑफेंसेस की कैटेगरी में रखा गया है फॉर द पर्पज ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. और जहां पे सजा जो है वो 3 साल से 7 साल तक की सजा है उसको सीरियस ऑफेंसेस की संज्ञा दी गई है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 54. और जो तीसरी कैटेगरी है ऑफेंस की वो है हीनियस ऑफेंसेस, सेक्शन 2 क्लॉज 33. तो जहां पे 7 साल से ज्यादा की सजा है वो जो है उनको हीनियस ऑफेंस रखा गया है. यानी कि बहुत ही जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, गैंग रेप में अगर चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, रेप के केसेस में इन्वॉल्व हैं विच हैज बीन कमिटेड इन अ हीनियस वे, सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट दैट वेदर इट कम्स इन द category of heinous offenses or not for the purposes of the juvenile delinquency. But the cutoff is there that if the 3 years imprisonment तक के जो केसेस हैं उनको पेटी ऑफेंसेस में रखा गया है. 3 साल से 7 साल की जहाँ पे सजा है वो सीरियस ऑफेंसेस हैं, और जो हीनियस ऑफेंसेस है वहां पे सजा 7 साल से ज्यादा की है. तो अगर किसी बच्चे ने हीनियस ऑफेंस किया है और वो 16 साल से ऊपर है लेकिन 18 साल से कम है तो उसके लिए एक डिफरेंट प्रोसीजर जो है वो एक्ट के अंतर्गत दिया हुआ है. वो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अभी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं इस एक्ट में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कुछ सिद्धांत हैं विच नीड टू बी फॉलोड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. तो जहां पर भी इस एक्ट के प्रावधान को लागू किया जाना है वहां पे उन सिद्धांतों को ध्यान में रखना जरूरी है. सो सेक्शन 3 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट talks about certain principles which should be taken care of by the central government, by the state government, by the Juvenile Justice Board and the other agencies which are responsible for implementing the provisions of this act. तो पहला जो प्रिंसिपल है that is principle of presumption of innocence. तो जैसे कि presumption of innocence IPC में तो up to the 7 years है. Doli in capex, the child cannot commit a crime if he is below 17 years of age. But for the purpose of this particular act, the presumption of innocence will continue up to the age of 18 years. So any child shall be presumed to be innocent of any malefied or criminal act up to the age of 18 years. Then second principle is that of dignity and worth. So all the children should be treated with equal dignity and rights. Then principle of participation. Every child shall have a right to be heard and to participate in all the processes and decisions which are affecting his interest and
The child views shall also be taken into consideration with due regard given to his age and maturity. यानी कि जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर चल रहा है या जो भी प्रोसीजर है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत, उसमें बच्चों का भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा, उनको भी सुना जाएगा और उनकी एज और उनकी मैच्योरिटी को ध्यान में रख करके ही उनकी बातों को जो है वो समझा जाएगा. Then there is principle of best interest. So all the decisions regarding the child shall be based upon the primary consideration that they are in the best interest of the child and help the child to develop his full potential. Then there is principle of family responsibility. The primary responsibility of care, nurture and protection of the child shall be that of the biological family or adoptive or foster parents. तो जो भी गार्जियन है, चाहे वो बायोलॉजिकल हैं, फॉस्टर पेरेंट्स हैं या एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, उनकी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे का पूरा ख्याल रखें उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए. देन देयर इज प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी. ऑल द मेजर्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ विच इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्म, एब्यूज or maltreatment. And another principle talks about the positive measures that needs to be taken care of not only by the state but also by the parents. So whatever resources the families are having, whatever resources the community is having, it all should be used for promoting the well-being of the children, for facilitating the development of the identity of the child, for giving him the inclusive and enabling environment so as to reduce the vulnerabilities of the children. तो जो भी रिसोर्सेज फैमिलीज के पास अवेलेबल हैं, तो ना केवल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि कम्युनिटी भी, तो जो आस पास के लोग हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए या इस तरह का इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाए जिसमें कि बच्चा जो है वो एक स्वस्थ एनवायरनमेंट को फील करे, जिसमें कि वो अपनी पूरी क्षमता को जो है वो विकास कर सके. देन देयर इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सिमेंटिक्स. यानी बच्चे ने अगर कोई गलती कर दी है, कोई गलत कार्य किया है, तो उसके लिए उसके ऊपर स्टिग्मा इम्पोज ना किया जाए कि ये चाइल्ड तो बदमाश है, ये तो एंटी नेशनल है या एंटी सोशल है. इस तरह का स्टिग्मा जो है वो उसके ऊपर ना लगाया जाए. तो जो एडवर्शियल रिमार्क्स हैं या एक्यूजेटरी रिमार्क्स हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है वो किसी की भी बच्चे के लिए ना किया जाए, इवन ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑल्सो, इवन इन चिल्ड्रन होम ऑल्सो, जहाँ पे बच्चे रखे जाते हैं हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. तो जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं, दे ऑल नीड टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द चिल्ड्रंस इंटरेस्ट. तो इस तरह के शब्दों का उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए विच आर इन एनी वे डेरोगेटरी टू द चाइल्ड और पुट अ स्टिग्मा ऑन हिम ऑफ बीइंग एंटी सोशल. देन देयर इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स. तो कोई भी बच्चा जो है वो अपने अधिकारों को छोड़ नहीं सकता है. यू ऑल नो दैट ऑल द फंडामेंटल राइट्स and all the basic human rights are non-derogable rights and even they cannot be waived off. हम खुद ही से जीना नहीं छोड़ सकते हैं ये सोच करके कि हमारी परिस्थितियां जो है वो ठीक नहीं है. तो इस तरह से जो भी बच्चा है उसको एक मेंटल सपोर्ट की, एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है और वो किसी भी तरीके से जीवन जीने की अपनी इच्छा को ना समाप्त करे. इस तरह का प्रयास जो है वो पेरेंट्स को, फैमिलीज को और स्टेट को लेना है. So no waiver of any of the rights of the child is permissible and it is not valid whether sought by the child or by the person acting on behalf of the child or a board or committee. So all the fundamental rights, all the basic rights, all the human rights of the children need to be protected. तो ना तो बच्चों के द्वारा और ना ही उनके पेरेंट्स और गार्जियन के द्वारा इस तरह के राइट्स को वेव ऑफ किया जा सकता है. It means all kinds of support is to be provided by the family members, by the community, by the neighborhood society, by the state to take care of the child and of their parents also if they are not able to support the child. और अभी आपने देखा होगा इस कोविड पीरियड में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो चाइल्ड राइट कमीशन हैं उनको बुलाया
जितने भी स्टेट लेवल पे चाइल्ड राइट कमीशन हैं उन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला करके डिस्कशन किया, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, सबको बुला करके एक जो है वो रोड मैप बनाया गया है कि जो बच्चे इस तरह से ऑर्फन हो गए हैं, डेस्टिट्यूट हैं, जो अबेंडनमेंट की सिचुएशन में है, उनको किस तरीके से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। तो ये केवल किसी की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि अगर कोई बच्चा को सुरक्षा की जरूरत है, उसको किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत है, तो लोग आगे आकर के उसको सपोर्ट करें। सो नॉन वेवर ऑफ राइट्स इज नॉट allowed. Then there is principle of equality and non-discrimination. So no child will be discriminated on the ground of sex, caste, ethnicity, place of birth, disability, and equality of access, opportunity and treatment shall be provided to all. तो बच्चों के साथ भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी लेवल पे नहीं किया जाएगा. Then there is right of privacy and confidentiality. So even every child shall have a right to protection of his privacy and confidentiality by all means and throughout the judicial process. तो इसीलिए इन कैमरा ट्रायल होगा या एक क्लोज डोर एनवायरनमेंट में जो है वो बच्चों की जो है वो क्वेश्चनिंग वगैरह की जाएगी इफ देयर इज अ जुडिशियल प्रोसेस. सो देयर डिग्निटी, देयर प्राइवेसी, देयर कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट देयर आइडेंटिटी इज टू बी प्रोटेक्टेड and that is the basic principle. Then there is a principle of institutionalization as a measure of last resort. तो अगर किसी बच्चे को सुरक्षा गृह में भेजा जाना है या किसी बच्चे को सजा के तौर पे जो है वो दो चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा प्रोसिक्यूट किया जाना है, तो ये सब मेजर जो है वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो है वो लेने चाहिए कि ये अंतिम जो है वो एक्शन हो सकता है जिसके ऊपर जो है अथॉरिटीज जो है वो डिसीजन लेंगी. पहले कोशिश यही की जानी है कि बच्चे की चाइल्डहुड को जो है वो बचाया जाए. तो किसी भी तरीके से उसका जो चाइल्डहुड है उसका एब्यूज ना हो, उसके साथ जो है वो गलत व्यवहार ना हो. तो अगर उसको सुधार गृह में भी भेजा जाना है या प्रोटेक्शन होम में भी भेजा जाना है, उससे पहले सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको एक्सप्लोर कर लेना है. तो ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स की डेथ हो गई तो सीधे उसको जो है वो रिफॉर्मेटरी में भेज देंगे या चिल्ड्रन केयर होम में भेज देंगे. पहले देखा जाएगा क्या फैमिली मेंबर में कोई ऐसा मेंबर है, नियर एंड डियर रिलेटिव्स हैं जो कि उसको सपोर्ट कर सकते हैं. तो जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, किसी इंस्टीट्यूशन में भेजना है, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट के तौर पे हो या रिफॉर्मेशन के तौर पे हो या इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हो, तो किसी भी उसमें भेजने से पहले इस बात को देखा जाएगा क्या उसको फैमिली सपोर्ट मिल सकता है कहीं से या नहीं मिल सकता है. क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चा जो है वो सुरक्षित फील करे. अ काइंड ऑफ सेफ एनवायरनमेंट द चाइल्ड शुड फील. तो वो सेफ एनवायरनमेंट उसको कहाँ मिल सकता है, पहले उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद उसको कहीं और भेजा जाएगा. देन प्रिंसिपल ऑफ रिपैट्रिएशन एंड रेस्टोरेशन. एंड एवरी चाइल्ड इन द जुवेनाइल सिस्टम शैल हैव द राइट टू बी रीयूनाइटेड विद देयर फैमिली एट द अर्लिएस्ट. जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी कि अगर बच्चा इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, अगर उसने कोई इलीगल काम भी किया है, उसको सजा भी मिली है, तो जल्दी से जल्दी उसको काउंसलिंग करके, उसको एजुकेशन दे करके, उसको थेरेपी तमाम तरह की दे करके उसको दोबारा से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो है वो रीयूनाइट किया जाए. एंड ही शुड बी रेस्टोर्ड टू द सेम सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्टेटस इन विच ही वॉज. तो जिस स्टेटस में पहले वो रह रहा था, जिस एनवायरनमेंट में पहले वो रह रहा था, दोबारा से उसको उसी में रेस्टोर किया जाए. तो ऐसी कोशिश जो है वो अथॉरिटीज के द्वारा होनी चाहिए. देन देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट. सो ऑल द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी चाइल्ड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम शुड बी इरेज्ड एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि बच्चा जो है वो अपना नया जीवन फिर से आरंभ कर सके. तो उसको स्टिग्मेटाइज ना किया जाए, उसके ऊपर किसी तरह का जो है वो उसको उसकी इमेज को मेलाइन ना किया जाए. लाइक इट इज क्लीनिंग द स्लेट, कि जैसे पहले से कुछ लिखा हुआ है तो उसको पूरी तरीके से मिटा करके साफ कर देना. तो बच्चे को एक फ्रेश स्टार्ट का जो है वो मौका दिया जाना चाहिए. उसके खिलाफ जो थे एक्यूजेशन वाले वर्ड या एडवर्सेरियल वर्ड्स उसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. बाद में उसको पिंच करना, उसको ताने देना कि तुमने ऐसा किया था कभी. तो इन सारी चीजों से बाहर निकाल करके उसको मौका देना कि वो अपने जीवन में फिर से नया तरीके से अपने जीवन को शुरू कर सके.
Then there is principle of diversion. Measures are to be taken for dealing with the children in conflict with law without resorting to judicial proceedings. तो कोशिश यही की जानी है पहले कि बच्चे को इस प्रोसेस में ना डाला जाए जहां पे उसके खिलाफ जो है कोई केस चले, तमाम तरह की क्वेश्चनिंग हो, उसके खिलाफ एविडेंसेस, विटनेसेस वगैरह लिया जाए. पहले जानने की कोशिश की जाएगी उस बच्चे ने जो है वो अगर कोई गलत काम किया है तो वो काम क्यों किया है. तो इसके लिए सोशल ऑडिट होता है एंड देयर इज अ टीम which goes into the investigation of the circumstances which led the child to commit the crime. तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, पूरा ग्राउंड वर्क करने के बाद ही इस एक्ट के प्रोविजन जो है वो लागू होते हैं. तो बाद में जब अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीजर उसका देखेंगे तब वहां पे उसको डिस्कस करेंगे. द लास्ट प्रिंसिपल इज दैट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. दैट बेसिक प्रोसीजरल स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस शुड बी एडहर्ड टू. तो जो भी क्रिमिनल लॉ में नेचुरल लॉ के जो भी प्रिंसिपल हैं, जो हम लोग जानते हैं कि रूल अगेंस्ट बायस, राइट ऑफ हियरिंग, रूल अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वो प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस. तो क्रिमिनल लॉ के जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं वो सारे प्रिंसिपल जो है वो जुवेनाइल जस्टिस में भी लागू होते हैं. तो फेयर ट्रीटमेंट बच्चे को मिलना चाहिए, पूरा उसको मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात को कह सके फ्री एटमॉस्फेयर में, विदाउट एनी ड्यूरेस, विदाउट एनी कंपल्शन, बिना किसी जोर दबाव के वो अपनी बात को कह सके, वो बता सके कि अगर उसने कोई काम किया है तो क्यों किया है और उसके ऊपर किसी तरह का स्टिग्मा ना हो. तो देन ही शुड ऑल्सो बी गिवन द राइट ऑफ रिव्यू एंड द अपील by all the persons or the bodies acting in the judicial capacity under the act. तो जो भी प्रावधान है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में फेयर जस्टिस को लेकर के, यानी कि नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल हैं कि किसी भी के, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध किया है दैट इज नॉट अ क्रिमिनल अनलेस एंड अनटिल द गिल्ट इज प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ का है कि एवरीबडी इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल द गिल्ट इज प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के भी केस में जो है वो लागू होता है. So today we try to understood what is juvenile delinquency, what are the different reasons for it, and what are the basic principles which need to be followed if the proceedings are to be done under the Juvenile Justice Care and Protection Act 2015. नेक्स्ट टर्न में हम लोग देखेंगे अथॉरिटीज क्या हैं और किस तरीके से जो है वो अगर किसी बच्चे ने क्राइम किया है तो उसका ट्रायल किस तरीके से होगा, क्या स्पेशल प्रोसीजर उसके लिए अडॉप्ट किया जाएगा. सो फॉर टुडे, थैंक यू.